point because you have to choose what are your skills and what you like to do. That's it. You may like doing medicine, you may like to become medicine. You can. Sir, that's the simple fund of life is that you do it. What is legal things? And then also what you like to do, what skills you have to do self-analysis. Find out what your skills. You have to find out your weaknesses. You have to find out that what are your skills and what you like to do. Once you choose, you make a vision, make a strategy, write the questions, make a strategy, and you can become Anshul Jain, CEO of the world. Sir, स्टोरी आइलैंड था दो लोग के व्यू पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा है सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं कैसा सोचते हैं बट बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं कैसे तो दो लाइन खड़े थे एक को बोला कि लाइन क्यों करता तू ठीक है जाओ आइलैंड पे देखो कि कितना बड़ा धंधा हो सकता है तो दैट पर्सन ट्राइड टू गेट देखा वहां कुछ जिसने चप्पल नहीं पहनी स्टार्टेड ही केम बैक स्टार्टेड प्लानिंग सर मैं तो ये भी चप्पल आपकी कुछ नहीं बेच सकता हूं उसने कहा क्या रीजन है and then another guy who was standing right to him was his friend. He went there again. He saw and he came up, with this is one of the सबसे बड़ी opportunity है. And that's how business is created. कैसे opportunity सर वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता यानी कि आप वहाँ पे 1 लाख चप्पल बेच सकते हैं. All you need is to create a demand and a hype for your product, and then your business gets succeeded. आप observe करो कि आपने जो भी products भी use किए हैं, ये basically आप create करवाए गए हैं. बहुत सारे ऐसे products हैं जो daily use में आपके बैग देख रहे हो, बैग में आईफोन का प्रिंट लगा हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी उसमें है, स्पीकर है ब्लूटूथ वाला, उसमें कोई सडनली कोई नया इन्फॉर्मेशन आ गया, आप क्या करोगे उसको बाय करो. That the reason behind it is that when you have creativity, when you have passion for your work, and when you are able to identify the problem and create the best of the solution, you will get buyers, of course. And that's how all the businesses and all the big business models are being. So all the students who are sitting here, I just want to reiterate the fact that these two people are sitting here, they can guide you really well. हिंदी में बात करें अपन सब सोचते हैं we start something, we want to make money, isn't that true? Even if you are doing your law, but हमें नहीं पता होता how can I start something of my own, how can I make money, what is that idea? There's a background that is required, and I just follow another question with this. That's a lot of anybody can answer. There are myths and misconceptions. Because a lot of young entrepreneurs, they're dreaming of starting something big. One myth that I always thought that I can start a business because I'm a humanities guy. I don't have that experience. I have family that is service class family. So please can you dispel those myths and misconceptions and what advice would you like to give to them? Thank you for putting this question, and it is a very valid question. तो मैंने पूछा कि भाई जो सर्विस ओरिएंटेड है या तो माइंडसेट है कि आप कोई एकेडमिशियन की फैमिली से है, कोई साइंसदार या कोई बहुत अच्छे पोएट की फैमिली से, कोई सिंगर की फैमिली से है. तो सिंगर का बेटा सिंगर बनने की जरूरी नहीं है. हमें ये देखना है कि हम किस फील्ड के लिए बने हैं. बेस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस इज दैट आई डोंट नो हाउ मेनी will agree that when you do service, you do it for yourself. You cannot pass on that skill or that goodwill that you have created with your son. But with the business, you create a legacy and a goodwill that is transferred for generations. So when you are doing business, when you are toiling in hard, when you are putting a lot of efforts, you obviously you cry each day, knowing that probably you don't know what you're going to do, or in case you fail. But in case if you get passed, and in case if you build that legacy, then your generations would remember you, and that's how Vedanta, Tata, and Bhati are. So in businesses, it is exactly that. And another best part about being into business is that you're always connected to your roots. सर मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ के राजस्थान के जो बिजनेसमैन, चाहे वो मारवाड़ साइड के हो, सीकर साइड के हो, इन्होंने अपने मतलब पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना परचम फैला. हजारों इंडस्ट्रीज इनकी हैं.
और आज भी जो अपने रूट से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर आप नाटक को सुजानगढ़ में होगा भी और बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है सर, ये गारंटीड है कि वो बिजनेसमैन वापस सोसाइटी में गया। He is building lot of schools, colleges, building hospitals. So that's what CSR activity is all about. So in business, you can always earn and give it back to the society. So that's the true nature of a business. You earn some money and you donate some, and obviously the legacy continues. और एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगा जो आपने बोला, जो मैंने पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, वी स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूपीज टोमेटोज एंड बेकरी इन द ईयर 2004. The first 3 years were the most difficult years of my life. I was a qualified company secretary and also did job. तो हम लोगों को क्या आदत रखते हैं वाइट कॉलर, जैसे आपके पास डिग्री आ गई यूथ के पास, मैं भी अपने आप को अभी यूथ कंसीडर करता हूँ, हम लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें लगता है यार अब हमारे पास कोई ऐसी जॉब आएगी चल के आएगी क्योंकि मेरे पास डिग्री है और आपके पास डिग्री है, डिग्री, पर आपकी उस डिग्री ने आपको स्किल दिया है या नहीं दिया है वो आप ऑब्वियसली काम के साथ सीखते हैं। डिग्री आप एकेडमिक वाइज एग्जाम देकर क्लियर कर सकते हो, पर स्किल आपको हमेशा वर्क प्लेस में मिलती है। सो उस स्किल को जनरेट करने के लिए जब हम टाइम देते हैं किसी भी प्रोफेशन में, आज भी कैमरामैन अगर कोई अच्छा करता जा रहा है तो सर वो कैमरामैन 1000 रुपए घंटे की जगह एक बार ऐसा नहीं जाता है, मैंने शादियों में वो 1 लाख रुपए दिन के लेने लग जाता है। तो अपने स्किल को उसने इतना ब्रश अप कर दिया कि एक लॉ पढ़ने वाला बंदा जो भी लीगल एडवाइजर है किसी भी कंपनी का, जब वो सर्विस में छोड़ के खुद की एडवोकेसी में आता है, शुरुआत चाहे 500 रुपए से आपकी होती हो, लेकिन एक स्टेप ऐसी भी आती है कि कंपनी आपको उसी केस के 5 लाख रुपए देती है, लेकिन आपने क्या स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, और उस टाइम के साथ आपने स्किल को सीखा है टाइम देके, और जब आप टाइम बाय करते हो तो स्किल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट वी शुड कंटिन्यू टू वर्क, और इसीलिए मैं कोई डायलॉग भी लाया है, बाय द टाइम यू थिंक योर फादर इज राइट यू विल हैव अ सन हु विल थिंक यू आर रॉन्ग। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो कहेंगे कि यार आप गलत हुई है, लेकिन आपको लास्ट में समझ में आएगा कि जो दिल ने आपको बात कही थी शुरू में वो सही थी, और आप दिल को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। देखिए साहब ने बात कही कि आप कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेकिन हम चाहते हैं जो एजुकेशन से वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को क्लासरूम में आप देखिए आईआईटी से निकलते हैं तो करोड़ों के आईआईटी से निकलते हैं तो करोड़ों के टारगेट क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री में जो फ्लोर पर रिक्वायरमेंट वो फ्लोर वाली लर्निंग उसने क्लासरूम में so that this gap has to be why जो फ्लोर पे आप लोग ऐसे इंडस्ट्री सिखाते हैं सीखते हैं वो चीज थ्योरेटिकल ना होगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर क्लासरूम में हो जाएगी थ्योरेटिकल के साथ में, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, जैसे लंदन में या यूके में आप कह लीजिए जो भी वेस्ट के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 3 days ही क्लासरूम होता है, बाकी 3 days वो अपना स्टूडेंट ट्रेनिंग या स्टूडेंट वर्क इंटर्नशिप या फिर जॉब करते हैं। 3 days क्लासरूम के अंदर सब जो भी स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड you will have to come and you will have to solve the issue, you will have to resolve the problems, you will have to give the presentation. So that's the core important. That's how this gap will be removed, and that's how this gap can be, resolve the issues. So in the classrooms, आज मैं पढ़ रहा हूँ किसी की डिग्री ले रहा हूँ या मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो लॉ पढ़ रहा है स्टूडेंट या कोई भी फील्ड का स्टूडेंट वो वही पर क्लासरूम में ही सीख जाए जो उसको बोर्ड के अंदर करना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दिया जाएगा, जितना एक्सपोजर दिया जाएगा, उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। और अभी मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस बार आई है 2020 के अंदर, और इस नीति के अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी को बताया गया है, स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चूज कर सकता है, वो किसी भी टाइम पे डिग्री को छोड़ सकता है, किसी भी टाइम पे डिप्लोमा उससे स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, और
आई जरूर लेट है, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा नीति, हमारी शिक्षा नीति जो कितने वर्षों से चली आ रही है, उसके अंदर एक बदलाव आएगी, चेंज। और once there will be some change, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ओरिएंटेशन दिया जाएगा, तो मुझे लगता है गैप रिमूव होगा और स्टूडेंट बहुत अच्छा। I think we are a lucky generation of millionaires जिनके सामने रिफॉर्म हो गया है national education policy. Also, as you said, that skill sets के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो. When I'm hearing Pradyuman Anshul sir, I would love you to give that example of Ma Lakshmi and Ma Durga that you gave. And also, I would want both of you to give concluding remarks also on this discussion. I just want to end with one example of how people from different backgrounds are coming up as great entrepreneurs. I hope you heard the name of Pradyuman Singh, who is the founder of Unacademy. How many of you have heard of his name? Pradyuman Singh. You've heard? All of us. So he's cracked, I don't know how many exams. In first attempt he was the IAS officer, and then he realized, no, now this is not what I want to do. And he started his own business, and today, oh my God, it's $1 billion business. This is how he found opportunity. But first, he focused upon bringing up that skill. He focused upon learning, and now he's a successful person. So, Anshul sir, and then we will give your concluding remarks. I think we are more than blessed with booming capital markets, with ever-growing companies in India, best of the skill set is in India. And that's why I said that this era will be India's era. Next 10 years or 20 years, India is growing at a much faster rate than what all other countries in the world are. So we are probably sitting in the best of the place. All we need is to identify the right opportunity, sit in that ship. Now the best part about love, like I always quote this example. See, in life we are basically craving for three things: mind, money, and muscle. So you say that when you have mind, that is, if you pray Ma Saraswati, and if you are blessed with your wisdom and your knowledge, you can have control over money and power both. That's what we see when you are like educated, when you have full of knowledge, आपके पास automatically पैसा और सम्मान और power automatically generate. That's how Ma Saraswati is blessed. So when you have three M's in your life gets completed. And then finally, when you have three M's, the fourth M, that is the mental satisfaction and the momentum that you receive on any of the big platforms, it automatically happens. That is Saman. And another thing that I like to quote here is that when you talk about all the entrepreneurs, we must also study the failed businesses. Because see, in our society, why is it that we always look forward for rising sun? So there are thousands of examples where they have failed also. But the best part about being a failure when somebody else is failing is that you will learn from that failure that ये mistake मुझे definitely नहीं करनी है business में इस model पे I won't be able to survive. So you have to study all the analogy, all the models of the business before you put in your heart money, either of your dad, of your friend, or any of the investors. You should have that project running in the mind before you actually implement it, and then you should not put all the eggs in one basket, because you should always have a survival plan. If you don't have a survival plan, and then obviously we all end up into depression. So I would suggest you should always have a second B plan working for you in case the first B plan fails. That's what I would suggest. हमें जिससे अभी दिया गया स्लॉट 1 घंटे का दिया गया, हमारा तो काम होता है, इतने सारे लोग आए मेरा सिंपल एडवाइस और सजेशन ये है कि स्टूडेंट्स को अपने आप में वर्कआउट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करके उसे वो अपने स्किल्स जो उसके पास स्किल्स हैं या जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको स्किल की लर्निंग कर और करने के बाद में वो लाइफ आप चूज करें। चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, इन सब जो भी आप बनना चाहते हैं आप तभी बन पाएंगे और तभी आप सेटिस्फाई रहेंगे
अपने प्लेटफॉर्म चूज करिए जो आप चाहते हैं। और एकेडमिशियन से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। We have to provide the industry exposure. We have to remove the gap, match the gap. What industry wants, what we are producing, we have to rethink. We have to analyze, and then we have to do. So thank you so much for inviting me here. We just have one question. Yes. Hello sir, the topic is quite insightful. My name is Verma and right now I'm in the marketing company. I've been working for past 8 years. This thought comes to me again and again that I should start a business, and I have now very good experience of working in the TV industry. I've worked for 4 years. And I do have an idea that I want to sell online. सारा घर में दोबारा से जोड़ Because I have been on वैसे तो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है getting into that seat of a leader is another level. It's a different mindset. And then there is this fear of unknown that after putting your assets and doing everything, what will happen, even though I have the experience. So how to get over it is my question. I will tell you the easiest of the ways to do it. I also belong to a very humble family background. So my suggestion to you is if you really want to take a business, especially in the jewelry industry or to sell it online, the best way initially is to work a few years with any established jewelry manufacturers or a trader so that you learn the trade secrets. Are you getting my point? And another thing is, okay, and another thing is by building that relationship, when you work in any of the portfolios, you build up a relationship and create a good network for your own self. So if you work for a company, you have n number of customers who come into the company to interact with you. Are you getting my point? So slowly and gradually, when you build a capital, when you build up relationships, one day you can take a call that from this day I really want to start now. You have enough of the money available because for business what you need land, labor, capital, entrepreneur, and the most important part is idea. So the day you have all these 5 elements matching, you can take up a call and you can start some business. Excuse me, I'm so sorry. You're running out of time. Let's just do it very quickly. The thing is that if I do it, I'm going to not put that top of what I'm not going to do. So, the work pressure is so much because I'm the only one in that organization. Then our patients level goes down day by day. So, how many people are because motivation cannot be the single thing that will keep you going. So you think that you are the only earner in the company? I mean, you are the only If I start a earner. company, I am doing myself. At least in the initial days, me and my dad. Have you seen the movie Guru? No, I am not a motivational actor. Okay, no problem. So, what all I want to tell you is that if your instincts are high and if your why is clear, how will it happen automatically? So, all your see in the world there are 3 people in the world whom you meet every day. One person is that he knows that he knows. Second is he knows that he doesn't know. And third is he doesn't know what he doesn't know. So you have to be either of the first two. You know that you know, and you know that you don't know. So something that you don't know, you can always learn, implement, execute, and one day you will get this. Yes, so thank you. Just know your why and you will get all the answers. With this, I will just conclude the session. Thank you very much to our esteemed panelists. It was an honor to hear from you. Even I personally learned a lot from both of you. And I really want everybody who is sitting here and our audience live to take this session outside, take it with your home and just introspect the ideas that were discussed in this session. Thank you very much, Jain.